Assalamualaikum everyone, this is Laiba Durrani. Welcome to my YouTube channel. आज हम बात करेंगे about changing world order and multipolarity in post-American era. But before that, we'll analyze that what is world order actually. So, in simple terms, world order means distribution and balance of power, rules, and norms through which states interact with each other in international system. It is how the states govern the world politically, economically, and militarily. And world order basically means the distribution of power structure, how the power is divided among different states. If there are multiple superpowers, then the world order is known as multipolar world order or multipolarity. If there are two superpowers, then the world is known as bipolar world order. And if there is only one hegemon, then it is known as unipolar world order, as we have witnessed in post Cold War era, when only United States emerged as the only and sole hegemon of the world, and it was dominating and influencing the global politics. It was influencing the world through its economic leadership, its military might, its cultural influence, and having a dominant say in financial infrastructure such as IMF and World Bank. So and before that, during World War One and before World War One, Europe was dominated by multiple superpowers such as Russia, France, Britain, Germany, Ottoman Empire, United States. And then after World War Two, there were only two superpowers left. That was United States and USSR. From 1947 till 1991 is known as Cold War, where we witnessed proxy wars, arms race, and a constant rivalry and competition between USA and USSR. And then finally, in 1991, USSR was disintegrated and United States emerged as the only hegemon of the world. But now a constant debate is going on that the world is again shifting from unipolarity towards multipolarity. तो करंटली एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स की डोमिनेंसी में, उसके हिजेमोनिक स्टेटस में। कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं पास में जिसकी वजह से ये डिक्लाइन एविडेंट होता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि हेस्टी विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, internal political polarization in the United States, its increasing national debt, and then it was unable to cope with certain global crises such as climate change, such as COVID. So that made it evident that United States is not as influential and as dominant as it was before. And another factor of this changing world order is rise of China. China is emerging as the sole competitor of United States dominancy. It has emerged as the world's second largest economy, and it is increasing its sphere of influence through Belt and Road Initiative in Asia, in Middle East, Africa, and in Europe. Militarily, it is transforming and it is modernizing its military force. It is claiming territories in South China Sea and in Taiwan Strait. Once again, in South China Sea, it is giving tough competition and tough time to United States. Technologically, China is leading in 5G, in artificial intelligence, in quantum computing. And other than this, the Beijing's model of governance, that is state-led capitalism and authoritarian regime, is continuously challenging, ideologically challenging the Western liberal order of governance. चाइना के अलावा रशिया भी रिसर्च कर रहा है, वो भी अपने सुपर पावर पोजीशन को ग्लोबल पॉलिटिक्स में रिक्लेम कर रहा है। प्यूटन जो है तो he wants revival of USSR, of Russia. And we have seen certain policies of Putin, that was annexation of Crimea, military intervention in Syria, and now the current Ukraine war, in which it is very evident that Putin is challenging the Western alliances, the Western hegemony. It is also working as a broker in different situations, and it is also expanding its diplomatic ties in Asia, in Middle East. It is expanding its ties with Iran, with China, with India, with Pakistan, and now yesterday it had
recognized the Afghan government, and it has praised Afghan government in combating terrorism against ISIS. So it is contributing to the multipolar axis, and it is increasing its sphere of influence. Other than Russia and China, the regional powers are also playing major role. They are also rising, such as India is expanding its military and economic capacity. Turkey, Brazil, and Iran are dominating the region. Um, European Union is also now working independently, particularly post Brexit era and after the unpredictable policies of Biden and Trump administration. Institutions like SCO and BRICS offers an economic and security alternative to NATO, IMF, and World Bank. So these institutions are also challenging the Western hegemony, the United States hegemonic status. अब आते हैं characteristics of this changing world orders में जो key characteristics हैं, that is distribution of power across multiple poles. Unlike Cold War era where there were just two superpowers, there was USA and USSR, and the power was distributed among these two poles, and they were influencing the world. Now, currently, there are multiple superpowers. There are multiple influential actors in the world. There are different states, such as China, Russia, India. There are regional coalitions such as ASEAN states, the SCO, there's African Union, so the Middle East Gulf states. So they all are individually reclaiming their positions and they're influencing the global politics. So in current days, in current circumstances, no state could unilaterally influence the world. दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज द फ्लेक्सिबल एंड competing alliances. अभी करंट सर्कमस्टांसेस में करंट एरा में कोई रिजिड ब्लॉक्स नहीं है, ब्लॉक पॉलिटिक्स नहीं हो रही है जैसे कि कोल्ड वॉर के एरा में थी. देयर वाज नाटो एंड देन देयर वाज अ वर्सो पैक्ट. तो अभी हमें एक फ्लूइड और ओवरलैपिंग अलायंसेस देखने को मिल रही हैं. फॉर एग्जांपल, इंडिया इज मेंबर ऑफ ब्रिक्स बट देन इट इज आल्सो मेंबर ऑफ क्वाड. Turkey is member of NATO, but it is still having good relations with Russia. On the other hand, Gulf region is now maintaining balanced relations with USA, China, and Russia. So the alliances are not rigid. ये ओवरलैप कर रही हैं अपने इंटरेस्ट को देखते हुए. जहाँ पे उनकी सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वहाँ पे वो एक स्टेट के साथ कोलैबोरेट कर रही हैं, जहाँ पे उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वहाँ पे दूसरे स्टेट के साथ. कोई रिजिड ब्लॉक्स और राइवरीज नहीं बनी हुई, sides or poles इतने prominent or dominant नहीं. Technology and cyber competition is also one of the major characteristics of this shifting world order. Over digital infrastructure, artificial intelligence, and biotechnology is as critical as the traditional military might. The US China tech rivalry is redefining the global power supply chain and the digital governance framework. Lastly, the major factor of this changing world order is contestation in international institutions. The call for reforms of United Nations Security Council, IMF, and World Bank is growing louder. जितने भी third world countries हैं, global south है, उनको ऐसा लगता है कि उनके उनके काफी grievances हैं, and they think that their voices are being unheard in these institutions, and these institutions are dominated by the Western powers. So reform should be made. और दूसरी तरफ चाइना का जो एक सिस्टम है उसके जो अब वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि AIIB बैंक हो गया या ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक हो, वो रिफ्लेक्ट करता है इस डिससेटिस्फैक्शन को. और वो जो एक सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है तो that provides equality, that provides equity, that provides security, it works on the basis of democratic norms. तो उसमें हर एक को एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, एक इक्वल से मिल रहा है. So that is also, challenging the Western international institutions. Now coming towards the implications, the positive implications की बात की जाए तो एक inclusive governance देखने को मिलती है मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में. एक डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के थ्रू इंटरनेशनल रिलेशंस को गवर्न किया जाता है, और जितने भी अंडर रेटेड और
अनइन्फ्लुएंशियल स्टेट्स हैं उनका भी एक से होता है, इवन दे आर गेनिंग डोमिनेंस इन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। बैलेंस ऑफ पावर है, कोई भी एक स्टेट यूनिलेटरली किसी दूसरे स्टेट पर इंटरवीन नहीं कर सकता है, और इसी तरह दिस में प्रिवेंट द ग्लोबल वॉर्स। एक रीजनल एम्पावरमेंट एक इसका पॉजिटिव इम्प्लीकेशन। जितने भी स्टेट्स हैं एक रीजन में, वो अपने रीजन के मुताबिक स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए काम कर सकते हैं। तो नाउ नॉट अ सिंगल स्टेट इज इन्फ्लुएंसिंग अदर स्टेट्स। हर रीजन में अपना एक ब्लॉक बन रहा है, और वो लोग अपने डेवलपमेंट, अपने इंटीग्रेशन और अपने प्रोस्पेरिटी के लिए काम कर। नेगेटिव इम्प्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो स्ट्रैटेजिक कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, टेंशंस बढ़ रही हैं, जितनी भी ग्लोबल पावर्स हैं वो एक दूसरे के साथ compete करती हैं, और उसमें प्रॉक्सी वॉर जो है तो वो इंटेंसिफाई होते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन में हो गया, सीरिया में हो गया, यमन में हो गया। उसके अलावा जो ग्लोबल कंसेंसस है वो वीक होती हुई नजर आ रही है ओवर डिफरेंट ग्लोबल क्राइसिस, जैसे कि पेंडेमिक, क्लाइमेट चेंज, एआई की रेगुलेशन पे जो अब बात होती है। सो उसमें डिफरेंट ओपिनियंस देखने को मिल रहा है, और ग्लोबल कंसेंसस जो है तो वो वीक होती हुई नजर आ रही हैं। इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन भी देखने को मिल रहा है। तो दीज वर सम ऑफ द नेगेटिव implications ऑफ multipolar world. Now, coming towards the role of Pakistan in this changing world order, Pakistan is one of the most important and pivotal state of South Asia. It lies at the crossroad of the geostrategic competition, and the role of Pakistan in this new world order depends on how it would make its policies and how it would navigate through the shifting alliances. Pakistan is friends with China. Pakistan is long-standing strategic ally of United States. It is having good terms with the Gulf states. It is a neighbor of Iran. It opens the gateway to the Middle East. It is the only nuclear power in the Islamic world. So Pakistan is having great importance, and we'll see the role of Pakistan in this changing world order. तो सबसे पहले अगर हम बात करें चाइना पाकिस्तान रिलेशंस की, दे आर enjoying friendly diplomatic ties over the years, और सी पैक का जो प्रोजेक्ट है वो BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। उससे चाइना इस कॉरिडोर से ना सिर्फ चाइना अरेबियन सी से कनेक्ट हो पाएगा, बल्कि इससे चाइना बहुत इजीली अपने जो इकोनॉमिक स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ा सकेगा। वो नए मार्केट्स एक्सप्लोर कर सकेगा इन अफ्रीका, इन मिडिल ईस्ट, और जो करंटली अब वो रूट यूज कर रहा है दैट इज वेरी लॉन्ग एंड दैट इज वेरी डेंजरस एज वेल, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट यूएस ने अपने जो हैं तो वो मिलिट्री बेसिस बनाए हुए हैं। एंड साउथ चाइना सी के थ्रू से जब चाइना आता है तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर चाइना। now the CPAC would be the shortest route, the safest route, और इससे पाकिस्तान को भी फायदा होगा। पाकिस्तान का जो एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो बढ़ेगा, उसको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। अगर यूनाइटेड स्टेट्स और पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान हमेशा से यूएस के ब्लॉक में था। It was ally of United States, but simultaneously, Pakistan is also enjoying friendly relations with China. अब जब चाइना और यूएस की राइवरी चल रही है, उसमें पाकिस्तान और यूएस की जो रिलेशंस थे वो थोड़े स्ट्रेन्ड होते हुए नजर आए। पिछले कुछ सालों में यूएस प्रायोरिटाइज्ड इंडिया ओवर पाकिस्तान, लेकिन अब रिसेंटली पाकिस्तान का जो एक वो सिग्निफिकेंट रोल था वो दोबारा से देखने को मिला, particularly when Donald Trump invited Asim Munir to White House. और पाकिस्तान को चाहिए कि वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करे, और वो इंडिविजुअली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ अपने टाइज को फॉस्टर करे। डिफरेंट सेक्टर्स में हो सकता है, काउंटर टेररिज्म के थ्रू, एजुकेशन, कल्चरल एक्सचेंज, एंड complete dependency either on China or either on US could halt Pakistan's opportunity. So Pakistan should explore its opportunities everywhere with China and with United States. उसको इस चीज़ का फायदा उठाना चाहिए that Pakistan is friends with China and it is also friends with US. उसका जो geostrategic location है that is very important. So nobody could really ignore Pakistan even if they want to. So
And we have clearly witnessed that in recent days during Iran-Israel rivalry and Iran-Israel war. अब ऐसे चेंजिंग सर्कमस्टांसेस में पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपने रीजनल इंटीग्रेशन पे काम करे, उसको फॉस्टर करे, रीजनल कनेक्टिविटी को इन्हांस करे, पर्टिकुलरली विद सेंट्रल एशियन स्टेट्स थ्रू एसीओ, थ्रू तापियन ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स, और इंडिया के साथ पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली इन्वॉल्व होना चाहिए। रिसेंटली हमने काफ़ी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट देखने को मिला। इससे पहले जब पाकिस्तान ने एससीओ का कॉन्फ्रेंस होस्ट किया था, तो उस पे व्हेन इंडिया फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर केम टू पाकिस्तान, तो वो बहुत पॉजिटिवली देखा गया था उस बात को। और ये सोचा गया था कि अब इससे पाकिस्तान और इंडिया के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो शायद फॉस्टर हो सकें, वो बढ़ सकें, उसमें प्रोग्रेस हो सके। लेकिन अब रिसेंटली जो स्टैंड ऑफ हुआ इंडिया पाकिस्तान के बीच में, उसके बाद दोबारा से स्ट्रेन हो गया रिलेशनशिप बिटवीन द टू। सो पाकिस्तान एंड इंडिया both should work on their regional integration, particularly in this multipolar world order while it is shifting towards that. और finally पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिक न्यूट्रलिटी अपनानी चाहिए, एज आई सेड अर्लियर, बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना। इसको ऐसे न्यूट्रल पॉलिसीज अडॉप्ट करनी चाहिए कि वो कम्प्लीटली एक ब्लॉक में ना जाए, कम्प्लीटली एक सुपर पावर, बिकॉज यू नो वी डोंट हैव a sole superpower in multipolar world order. Everyone is having equal influence, or maybe it could be less or more, but everybody's having certain. So it should not completely rely on China, and it should not completely rely on United States. So now that the unipolar world order is declining and the dominancy of United States is also diminishing over the time, it is not the sole superpower in the world, and it is not the only influential dominant state in international politics, but other states and factors are also contributing in influencing the international politics in international system. So, this changing world order is providing a historic opportunity to build a more equitable and a more inclusive global system through collaboration and through cooperation. And for states like Pakistan, it could be great opportunity if they adopt strategies with vision and with balance, through which they could strive their way in this new changing world order. For the third world countries and developing nations to strive in this new world order, they should promote multilateralism. They should call for the reforms of institutions. They should promote the regional diplomacy. They should develop the indigenous capacities, and they should adopt the strategic patience so that they are able to claim their position in this changing system, and they should gain the opportunity to become as influential as other states. So yeah, this was all for today. I'll see you in another vlog. Allah.